Good afternoon, sir. Afternoon. Visible है screen? Yes, sir. Okay. So now we have to आज discuss क्या करना है? Hello. Hello. Yes, sir. हाँ, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, तो उसको रिकैप करते हुए आज इलेक्ट्रिक फील्ड पर चलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? Okay, so just have a recap. The formula for the physics law of gravity, universal gravitation, and Coulomb's law, both of which inverse square law. So let us check out one of the universal law of gravitation is on fundamental properties of matter called mass, and next one is another fundamental property of matter. It's called electric charge. So both law is based on fundamental properties of matter. Okay. So physical formula of the universal law of gravitation is Fg equal to G m1 m2 upon r square, where proportionality constant and is called universal gravitational constant. M2 is the mass of two bodies or two particles, and r is the distance between the particles. And gravitational force is always attractive, and this is the electrical force that was given by Coulomb's law. And in this case, K is proportionality constant and takes the position of G in this case. So, and the numerical value of Z is 6.67 into 10 to the power minus 11, and it has 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per Coulomb square. Next, I have charge Q1 and Q2 in the same way as mass M1 and M2. And here R square, distance between two particles with mass M1 and M2. Here distance between two charged particles with charge Q1 and Q2. Clear? Okay. Next, first of all, we have to have a view about gravitational field. Then we will be able to learn about the electric field. Try to understand what is gravitational field. What's the definition of gravitational field? Look at our Earth is a huge mass, a body of huge mass. That's why it attracts all other lighter mass or any other mass towards its center. So range of attraction, range of a space around our Earth up to which it can attract any other object towards it is called gravitational field of Earth. In the same way, any mass, any particle with mass m will have its own gravitational field in a space and extended up to infinity. So when two bodies of mass m1 and m2 interact with each other with attractive force, they do so in two steps. First, every mass, every particles of mass m produce a field around it in the surroundings, and this field propagates in the space with the speed of light. And wherever any other particles with mass m1 or m2 comes in this field, get attracted. So interaction takes place in a two-step process. First step is every mass produces its own gravitational field in the space, and then this field overlaps with the field of other mass, and then we say interaction is
it increases. Here, as mass is of only one kind, therefore gravitational force is not repulsive. It is always attractive. But in case of electric charge, there are two kinds of electric charge, so it could be attractive as well as repulsive. So try to understand. Here, uh, all of you have already known the formula F equal to mg. Mg is the weight of a body of mass m on the surface of the earth where Earth is subject to gravity g. Therefore, g equal to Fg upon m. Yani force per unit mass is expression due to gravity, but here we call it gravitational field intensity or simply gravitational field. So this is gravitational field, expression for gravitational field intensity. So force per unit mass. So remember, recalling this format, in the same way, if we know Coulomb force Fe equal to K Q1 Q2 upon R square, then we define electrical force, electrical field of a charge Q as force experienced by unit charge, that is Fe upon Q, Fe upon Q, here Fg upon M and there Fe upon Q. It is denoted by a small g, which is gravitational field intensity. In that case, electrical case, that will be represented by capital E, electric field. Okay? Now try to understand. SI unit of gravitational force will be Newton and SI unit of mass is kg. Therefore, SI unit of gravitational field intensity will be Newton per kg. Okay, so next, in the same way that as you have looked in the previous case of gravitational field intensity, here uh, electric field is also defined as force experienced by a unit positive charge when brought near a source charge. Remember, two kinds of charge we have to recall. One is source charge and other is test charge. Test charge is negligibly small in comparison to source charge. And source charge might be a huge body of charge. Uh, Now try to understand. When a test charge is denoted by a small q and source charge is denoted by capital Q. In order to show that test charge is negligibly small and source charge is bigger than the test charge. So influence of source charge is to be measured in terms of test charge. So source charge is kept constant or fixed at a place or a point in the space, and now test charges to move towards the source charge, and source charge will repel this test charge, and intensity of repulsion experienced by the test charge is treated as electric field intensity of source charge. So in the same way as you have seen in case of gravitational field, mg equal to fg, therefore g equal to f upon m, that is mass. Gravitational force experienced by unit mass is called gravitational field intensity. In the same way, electrical force experienced by unit positive charge is called electrical field of the source charge. So in the same way here, force Fe has SI unit Newton and charge Q. This is test charge. Will have unit Coulomb, SI unit. Therefore, electric field will have SI unit Newton per Coulomb. Okay. Next. So next one is that, look at, this is the source charge. This yellow kind of charge is a source charge. It is a bigger charge in comparison to this one.
This charge is negligibly smaller than this charge. So this is the test charge. So this charge is kept fixed at this point in the space. This is fixed. And now the test charge is slowly brought closer and closer to a point which is at a distance r from this source charge. Therefore, this source charge, as it is a positive charge as well as, and this test charge is also positive, so will be repelled. So this source charge is fixed, so it will repel this test charge in this direction with a force Fe. It's okay. Therefore, electric field of this source charge will be expressed as force experienced by unit test charge as given as Fe upon, because charge Q experience a force Fe. So how much force will be experienced by unit positive charge? So unit positive charge will experience a force Fe upon Q. And this unit positive charge, whatever electrical force experience, is called electric field intensity or simply electric field. Okay. Next, next thing is that in case of, if we take source charge as negative charge, there is no differences. In the previous case, the source charge was positive, therefore force exerted on the test charge was directed in this direction. But here in this case, it is negative, and this charge, test charge is positive. Test charge is always taken to be positive. Test charge can never be taken as negative. So this source charge will attract this test charge in this direction with the same intensity of force, that is Fe. In this case, electric field will be represented by the same physical formula, that is Fe upon Q. But difference is that in the previous case, direction of electric field was outward from the source charge, but here in this case, direction of electric field will be directed towards source charge itself. Okay. Now try to understand. So far we have learned with the physical formula of electric field and its definition. Now we have to inquire about the whether electric field is a vector quantity or a scalar quantity. As we have already discussed that electric field is defined as force experienced per unit charge, electrical force experienced by unit positive charge. So force is a vector quantity, therefore electric field is also a vector quantity. And as we know that vector quantity includes direction and magnitude, as well as it can be added and subtracted in accordance with the rules of vector algebra. Okay, right now class is going on. I will call you. Okay. 4 बजे के बाद बुलाएंगे. Okay. And hence, so here, look at, this is the source charge, and test charge is situated at a distance of r from this source charge, and it experiences a force Fe. Therefore, electric field of this source charge will be directed away from this source charge here, and expression will be given as. In this case, this source charge is negative, and separation of test charge and source charge kept same, that is R. But difference is that in this case, electric force was directed away from the source charge. In this case, electric force will be directed towards the source charge itself. Therefore, electric field will be directed towards the source charge. And these two charges are point charge, source charge. Now try to understand. In the two situations, we have seen that electric field always diverges away from the positive point charge, and while in case of negative point charge, electric field directed towards the point charge itself. Taking these important points in mind set, we will draw the field lines
for the negative point charge and positive in the. So try to understand. Electric field is a vector quantity. A vector includes direction and magnitude and extra things I have told you that a vector has to fulfill three criteria. First one, it must have magnitude. Second one, it must have direction. And third one, it must be added or subtracted in accordance with the principle. If two primary conditions are fulfilled uh, and third one is not fulfilled, then it is not a vector. So electric field is a vector quantity. And next, can you apply Coulomb's law to this formula and simplify it? Using electric field, we can derive Coulomb's law, and using Coulomb's law, we can derive electric. All of you have understood electric field, what is electric field, and physical formula for electric field. And if you have, yes, any question? Any question? Hello, No, sir. अनुराग, कोई क्वेश्चन है? आवाज कट गया, फिर से बोलिए। आवाज कट गया ना? अच्छा, यस। ओके। सो ऐसा करो कि मैं ये लेक्चर फिर आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दूंगा, तो उसमें आवाज कटा हुआ नहीं सुनाई पड़ेगा, आवाज आपको पूरा मिल जाएगा। ओके, ठीक है सर। क्योंकि आपकी आवाज कट सकती है, हमारी आवाज नहीं कटेगी। रिकॉर्ड करके मैं भेज रहा हूँ। ओके, सो जस्ट लिसन व्हाटएवर यू एंड लुक ओवर द स्क्रीन. So we can apply concept of electric field and to derive electric force, and even we can derive Coulomb's law using electric field, and we can derive electric field using Coulomb's law. So similar. So try to understand here. Electric field is defined as force per unit charge. So if electrical force is QE, FE, and test charge has charge Q, then FE divided by Q equal to, because this is force experienced by this charge, unit positive charge, is equal to electric field. And now FE can be expressed as K Q1 Q2 upon R square. So Q1 is here capital Q and Q2 is small q upon R square, and this Q and this Q will be cancelled out, and we have electric field K Q upon R square. What's the difference between the electrical force and electric field? Electric field is independent of presence of other charge. It only depends on source charge, that is associated with the field of the source charge. It does not depend on charge of other. On the other hand, Coulomb force or electrical force depends on two kinds of charge, Q1 and Q2. This is the differences. In this case, more is this charge, source charge, more will be electric field. As distance R is increases, electric field go on decreasing as inverse of square of distance. And electric field will be zero at infinity. Where R is infinity, electric field becomes zero. Therefore, range of electric field is infinity to zero, because when you come to the source charge, that is bring this test charge to this source charge, R becomes zero. If R becomes zero, then force becomes infinite, and hence electric field becomes infinite. So maximum range of electric field is infinity, and minimum range of electric field is zero, where R becomes infinite. Okay. Now, this is the electric field of a point charge. A point charge having charge Q will have electric field at a distance R from the point charge itself. This is well-known expression, and where K is
they have a K is proportionally constant and has a numerical value 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per Coulomb square. Now question is that this is the question. अनुराग और सभी लोग ध्यान दो, क्वेश्चन को पढ़ना है कि इसको आप हल कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन आपके पास है। ये देखो, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। यहाँ फोर्स दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है 5 न्यूटन, तो इलेक्ट्रॉन वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स है 5 न्यूटन और चार्ज इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? 1.6 into 10 1.6 Newton to power 90. 90. 5 divided by 1.6 into 10 to the power 90. ओके, तो इसका जो भी आंसर होगा आप निकाल लोगे। देखो इसका आंसर आ गया, क्योंकि फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है 1.6, तो ये वैल्यू आ गया इलेक्ट्रिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1.5 meter away from the positive charge? This is the value of charge, positive charge, कैपिटल Q है, इसको कैपिटल Q कहेंगे। 2.1 इंटू, ये जो स्टार है इंटू का साइन, क्रॉस का साइन, मल्टीप्लाई का साइन, इंटू 10 to the power -9 कूलम। दिस इज कैपिटल Q। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। डायरेक्शन पता करने के लिए हमें देखना होगा कि चार्ज इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। नाउ मैग्नीट्यूड बताना है हमें, ये देख, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा? Q/r²। अभी जस्ट किया था, A का वैल्यू यहाँ पर 8.99 रखा है, हम लोग लेते हैं 9 into 10 to the power 9, तो वो वैल्यू लगभग अप्रोक्सीमेटली है 8.4 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गया, इसकी डायरेक्शन पता करने के लिए क्या करेंगे हम? विल सी वेदर इलेक्ट्रिक चार्ज, सोर्स चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव। Source charge is here positive, therefore electric field will be directed away from the positive charge. This is also a question. Remember, there is a negative charge particle of 0.32 coulomb. ये देखिए नेगेटिव चार्ज है, इसको हम इन द स्पेस, ये फ्री स्पेस में ये चार्ज को रख सकते हैं, जबकि ये नेगेटिव है। पहला क्वेश्चन है, what are the magnitude and direction of electric field? What are the magnitude and direction of electric field? यहाँ पूछ रहा है मैग्नीट्यूड क्या होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? हमारा फॉर्मूला होता है कि कैपिटल Q/r², इसी से मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो कैपिटल Q आपका ये है 0.32 कूलम और R का वैल्यू हमें दिया हुआ है, ये डाल देंगे, और A का वैल्यू हम डाल देंगे 9 into 10 to the power 9, तो 9 into 10 to the power 9 into 32 divided by 4, जो भी रिजल्ट आएगा उसे निकल आएगा। डायरेक्शन निकालने के लिए यहाँ क्या करेंगे? नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से डायरेक्शन विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस चार्ज इटसेल्फ। ओके, तो इस केस में देखिए, अब इसका सेकंड पार्ट कहता है, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स when an electron is placed at a distance of 2 meter away from this particle. इस केस में क्या है कि इस चार्ज से 2 मीटर की दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन को रख दिया गया, तब यहाँ ये इलेक्ट्रॉन फोर्स फील करेगा। तो पहले जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि इक्वल टू होता है Fe इक्वल टू क्या हो जाएगा? E into Q या Q into E। तो पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से इस इलेक्ट्रॉन की चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें निकल आएगा इलेक्ट्रिक फोर्स।
और चूंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, तो इसका डायरेक्शन किधर की ओर होगा? इट्स डायरेक्शन विल बी अवे फ्रॉम द source charge. The reason here there is a negative charge particle of this much in the free space. So what are the magnitude and direction of electric field? यहाँ देखिए फॉर्मूला अप्लाई किए K अपॉन R स्क्वायर और इसका वैल्यू पुट कर दिए तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें आ गया ये, और डायरेक्शन लिखा है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसको समझ लेना है। ये होना चाहिए अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, क्योंकि दोनों लाइक चार्ज इसलिए अवे होगा। लाइक चार्ज के केस में क्या हो जाएगा, अवे होगा या टुवर्ड्स भी होगा। अब जरा इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ये ठीक लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ, जरा बैक में आके देखिए। मैंने बताया था पहले कि नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होता है? नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। समझ गए कि नहीं? लेकिन शर्त था ये कि उस समय टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेते थे तब ऐसा होता था, लेकिन यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो खुद नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव नहीं है, इसलिए हम लेंगे अवे, यानी कि दोनों लाइक चार्ज है तो रिपल्सन होगा इस डायरेक्शन में, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम दिस सोर्स, जबकि यहाँ पॉजिटिव लेते तब इधर की ओर, इसलिए हमने कहा कि चार्ज इज ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव नेवर नेगेटिव। और ये सॉल्यूशन ये बता ही दिए हैं, इसलिए यहाँ पर ये कर लिया है क्या, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ये गलत कर दिया है, ठीक है। आपको लिखना है अवे फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज, रीजन में देना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ इज अ नेगेटिव चार्ज, तो एंड सोर्स चार्ज इटसेल्फ नेगेटिव, तो सोर्स विल बी रिपल्सिव। Next, there is a negative charge particle of this much in the इसका solution है, ये second part का question number B का, what are the magnitude and direction of electric field when an electron is placed in 2 meter away from this particle? तो फॉर्मूला हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड का equal to F upon Q, therefore F equal to Q into E, और इसलिए F इक्वल टू क्या हो गया 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम and 7.2 इंटू 10 to the power 8 न्यूटन पर कूलम, और सबका प्रोडक्ट ये है, फोर्स निकल आया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम था तो उससे फोर्स निकल आया। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमारा निकला था वो था, दिस इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। नाउ अब तक में जो हमने पढ़ा है उस पर एक बार रिकैप कर लेते हैं। Write down the definition of electric field in words. क्या कुछ याद है अभी? आप अगर आपके पास पेन पेपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नोट करके देखिए कि अब तक में जो कुछ भी हमने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में वो आपको पता है। दूसरा, write down the formula of electric field in two different forms. दो डिफरेंट फॉर्म में, एक था F E upon Q, E equal to F E upon Q, कैपिटल E equal to F E। दूसरा क्या था, कैपिटल E equal to K into upon R square, दो फॉर्मूला। तीसरा, अब देखिए, डिफाइन एवरी सिंबल इन द फॉर्मूला एंड आइडेंटिफाई देयर यूनिट, और उस इलेक्ट्रिक की यूनिट भी पता करना है। इसके बाद है आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अदर वेरिएबल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अदर वेरिएबल के साथ क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, इन दोनों के साथ क्या रिलेशन है। इसको ये समझ गए हो? मैं इसको भेजूंगा, इसका रिकॉर्ड भेजूंगा, ध्यान दीजिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जरा ध्यान देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिकल फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो मैंने
पहले वाले क्वेश्चन में जो मैंने डिस्कस किया था, नो टॉक नो टॉक, फर्स्ट वाले में किया था कि देखो इसको अपग्रेड कर देते हैं, टाइम इज रनिंग आउट, अपग्रेड। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ जो क्वेश्चन हमने पूछा था वो ये था कि राइट डाउन डेफिनेशन, राइट डाउन फॉर्मूला, डिफाइन सिंबल एंड आइडेंटिफाई रिलेशनशिप। इसी का आंसर वहां है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर 4 क्वेश्चन है और इसको रिकॉल कीजिए। अब मैं आगे बता रहा हूं, ये फॉर्मूला हम पहले से जान रहे हैं क्योंकि 2 फॉर्मूला चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो 2 फॉर्मूला यहाँ लिख दिया गया है, एक Fe/Q, एक KQ/R²। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोर्स चार्ज, और क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेस्ट चार्ज स्मॉल q। अब लास्ट में क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये लास्ट क्वेश्चन का सारा पॉइंट्स है। अब देखिए, अब है कि इफ यू शिफ्ट द टेस्ट चार्ज अराउंड वेयर यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द सेम मैग्नीट्यूड। अब देखो कि इस टेस्ट चार्ज को हम अगर शिफ्ट करना चाह रहे हैं इसके चारों ओर अराउंड दिस सोर्स चार्ज, तो इस तरह से हम शिफ्ट करेंगे इसको कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहने का मतलब क्या है, फोर्स सेम रहेगा। तो फोर्स कब सेम रह सकता है, चार्ज तो सेम है, चार्ज को कांस्टेंट रखे हुए, क्यू सेम है, ये चार्ज सेम है। तो फोर्स को सेम रखने के लिए, फोर्स को कांस्टेंट रखने के लिए क्या रखना पड़ेगा, सेम आर, डिस्टेंस को सेम रखना पड़ेगा। तो कीपिंग सेपरेशन बिटवीन दिस टू चार्ज फिक्स्ड and you move this test charge around this source charge, then electric field will remain same around this. As soon as distance changes, electric field will change. So look over the things. This is the things. ये देखो, ये सोर्स चार्ज है और इस टेस्ट चार्ज को हम ऐसे मूव करा रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले गए, लेकिन एवरी पॉइंट पर इसका फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई ही होगा, दैट इज in this direction and directed away from this test charge, because it is test charge and it is source charge and both are positive. This is positive and this is also positive. So directed away from the source charge, and distance is constant between the source charge and test charge. So electric field will have fixed magnitude, but direction will be away from the source charge. So look at, this is the situation. So what will happen if you move the test charges away from the source charge? Now question is that in previous case I was moving the test charge in such a way that separation between the two charges remain constant, therefore electric field remain constant. But in this case electric charge is, test charge is moved away from this source charge. In such case, distance between source charge and test charge get changed, and hence electric field intensity changed. अगर इस टेस्ट चार्ज को इधर की ओर मूव करा देते हैं तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस चेंज हो जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा। जबकि ऐसे मूव कराते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। ऐसे ऐसे मूव कराते हुए, ऐसे ऐसे मूव करते हुए चारों तरफ स्फेरिकली मूव करा रहे हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रह जाएगा ऐसे। ओके, provided separation between the two test charges remains constant. Now question is that, now if test charge is moved away from this test source charge, then distance changes. As distance changes, electric field intensity will decrease because it is inversely proportional to distance. Look at this location, electric field is a little bit higher, but when we come to this location,
electric field will be comparatively smaller than the field at this location. Look at here. Yeah, this is now this charge is moved in this way, in this way, in this way. But in this case, test charge would have experienced much more repulsive force in comparison to this location. Therefore, electric field intensity at this location will be comparatively lesser in comparison to this location. So, The this activity show yes, that electric field decreases as we move away from the source charge. yes, तो देखो दो टेस्ट चार्ज को दो लोकेशन पर रखा गया है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। दोनों लोकेशन में क्या फर्क है? यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा यहाँ से यहाँ तक। फर्क क्या होगा कि यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में डिफरेंसेस होगा, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स चार्ज इन द टू लोकेशंस आर नॉट सेम। Now, this is a vector representation of electric field of a point charge. Remember again and again, because such types of questions comes in the board. This is positive point charge. Therefore, field lines, electric field lines, appears to be emerged out of the point charge and diverge out of the point charge and ranges up to infinity. On the other hand, in case of negative point charge, electric field lines appears to be converging onto the point charge itself. And here in this case, electric field line appears to be diverged out from the point positive charge. And in case of negative point charge, electric field lines appears to be converged onto the point charge. Okay. So this is the case. This is positive point charge. So field line is directed away from the point charge. This is field line directed away from the point charge and will move up to infinity in the same way as the light of a bulb going away up to infinity. In the same way, electric field lines will go up to infinity from the point positive charge. And in this case, look at, this is negative charge. So electric field line appears to be coming from infinity and converts onto the negative itself. Now, remember one more thing, as we are closer to the point charge, large number of field line crossing this area, but as we move away from the point charge, only one single field line passing through this area. Therefore, field intensity will be stronger at this location because three field line is crossing this area, and but at this location only one field line is crossing this area. So intensity of electric field strength will be stronger at this location in comparison to this location. In the same way, here electric field intensity will be smaller and here will be greater. So concentration of field lines at any point in the space gives the strength of electric field. Remember, this is the field line. This is variable field lines and we have several points E, C, A, B and D. Now question is that where can you find the strongest electric field? आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर ज्यादा क्लोजर है वहीं पर स्ट्रॉन्गर होगा कि यहाँ डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्लोजर है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर एट पॉइंट डी. Yes. Next, field lines of force representation. Field lines of force representation. This is the positive point charge and this is negative point charge. I have already discussed about this. So look at the pair of charges here.
one of the positive charge and one of the negative charge are brought closer to each other, then electric field lines of the two system of charge will appear like this.